बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सी ए 627 यानी कि साइबर सिक्योरिटी फाइनल टाइम प्रिपरेशन, और जिसमें आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। पहले हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने क्या किए थे, एमसीक्यूज, और वो ये वाली फाइल है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन वो है जो पेपर में रिपीट होते हैं या आपके जो स्लाइड्स हैं, मीन जो एलिमेंट्स पे स्लाइड्स के बने, ठीक है, वहां से लिए गए। अब मैं एक बात और क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपको पार्ट 1 की जो है वो ये वाली फाइल चाहिए, या पार्ट 2 की चाहिए, या जो पार्ट 3 अपलोड होगा उसकी, या पार्ट 4 की। पार्ट 3 में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 4 में हम लोग शॉर्ट नोट्स करेंगे। तो आपको उस वीडियो पे 100 व्यूज प्रोवाइड करने होंगे, तब ये फाइल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में शेयर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पेपर कल है या आज है, आप उसी टाइम मीन्स वो फाइल लेना चाहते हो, तो देन आपको ये फाइल जो है वो पेड मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द CIS benchmark? What is the main purpose of implementing CIS benchmark? What is the difference between CIS level 1 and level 2? What is the main controller and member server? What is the difference between scored and not scored CIS recommendation? फिर है हमारे पास CIS critical security control, और फिर पर्पस बताना है इसका CIS CAT प्रोसेसर का। फिर हमने करना है CIS CS80 at its 2 version, DIS से STIGS एक्सप्लेन करना है डेटा सिक्योरिटी कैटेगरीज कोड को। फिर है why must console session time out after inactivity? What should account lockout during to be set to 0? We must antivirus signature be updated daily. फिर है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, स्टेट 2 की डिफरेंस बिटवीन CIS एंड DIS से। Purpose of PCI data security standard. Who's manage PCI DSS and who create the SSC? What is the objective of PCI DSS requirement? Why must inactive user account be removed or disabled within 90 days under PCI DSS? ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। What is the COVID and its primary objective? और यहाँ पे हमारा जो वीक 8 था वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं वीक 9 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मालवेयर? नेम 3 कॉमन सब टाइप ऑफ मालवेयर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। Why is malware a serious problem of business and individual? What was the total number of malware variant reported by Symantec in 2017? How much did cybercrime included malware attack cost the global economy in 2021? List 4 common defense strategies against malware. Malware affects antivirus reduction. Computer virus. Difference between virus and a worm. Who is considered the theoretical father of computer biology? Okay, what was the chipper virus? Purpose of the Reaper program, brain virus, and why it's significant? What are the 3 main parts of computer virus? Computer worm. How did worm differ in effect from virus? Ransomware. Trojan horse in computing. Trojan typically communicate with attackers. Give 2 examples of malware designed to avoid detection and mislead users. फिर हमारे पास वीक 10 स्टार्ट हो जाता है। Why are wireless network considered more vulnerable than wired network? What are the key factors contributing to high wireless security risk? Give example of wireless client. Function of a wireless access point. Transmission medium in wireless network. IEEE 802 project. Standards by ICC की। फिर है BSS in WLAN.
independent BSS extend service set threat to wireless access point. How does IEEE 802.I1 prevent unauthorized wireless access? Wi-Fi Alliance. What was the first 802.11 standard to gain board acceptance? Scotty algorithm was defined in the original 802.11 standard. VPN, why it was introduced. Encryption protocol WPA3 introduced and its significance. Service does 802.11i RSN provide. How does BSS handle communication between two stations? Does IE 802 Scotty factor on? How is Scotty ensure when two STA communicate in the same BSS? Scotty handle in an ad hoc IBSS is end-to-end Scotty provide across the distributed system in IEEE 802. First phase of IEEE 802. What happened during authorization phase of RSN? Purpose of key management phase. Protected data transfer phase. Connection termination phase. Which standard provide port-based network access control of WLAN? Authentication protocol used with IEEE 802.1. Okay, ये वाला क्वेश्चन भी important है again. Difference between control and uncontrolled ports. Pairwise key and group keys. Oh shit. कहाँ गया हमारा? हाँ यहाँ पे थे हम लोग. Control and uncontrolled port in 802. हाँ pairwise master key फिर ठीक है. PTK फिर components of PTK. फिर GTK generated and distributed. How और फिर how है WPA. Enhanced security compared to WPA. why WPA introduced. फिर हमारे पास next week start हो जाता है 11. हाँ buffer overflow जिसमें first है फिर है what can attack achieve through a buffer overflow. Which WhatsApp component was vulnerable to buffer overflow 2019? How can remote attack exploit the WhatsApp vulnerability? Moral bomb, code red and weighted its target. Three phases of code red bomb. SQL malware non overflow attack still common. Where can buffer be located in memory? What happens when buffer flow occur? What is shell? Code in buffer overflow. Main prevention strategies against buffer overflow. Two main requirements for exploiting. Find vulnerable program. Consequence of exploiting a buffer overflow. Assembly language program more prone to buffer overflow. Data interrupted at the machine level. Overflow considered a serious threat even today. What are modern high-level languages like Java, Python not vulnerable to buffer overflow? Trade-off of choosing high-level language. High-level language limited in writing device driver. Memory manipulation but include high-level feature. Who designed C programming? C widely used for Unix. What caused C program to be vulnerable to buffer? What is the unsafe about the cget function? What happens if input exceed the buffer size in C? Shellcode in buffer.
Shellcode offers specific to operating system restriction on the shellcode. Two main type of defense against buffer: compile time defense, runtime defense. C require programming. Example of an operating system hardened. Recommendation necessary for the most compile defense. Microsoft response to buffer. Runtime defense. Main purpose of changing memory management. Stack non-executable help prevent. Hardware supported and required for non-executable. A long-standing support for non-executable. What might some programs still need executable? What does recognizing the stack location protect against the buffer effort of randomizing heap memory? Randomizing the address of central library function. Which operating system include multiple memory randomization and protection? Most effective way to defend against buffer security differ from software quality and reliability. Three recommendation of Nestor 8151. Defense as secure programming. Key role of defense programming. Handle why must software handle our input environment? Environmental variation. Simple program module illustrate in program software security. What mindset is required for defense program? Defense programming conflict with business. One programmer assume that can lead to vulnerability, while testing often insufficient to identify buffer overflow. Safe coding. Handling program input. See library routine in input handling. Handle variable size input. Interpretation of binary input. Real word binary. Challenges arise with textual input. Injection attack. SQL injection be prevented. Seed interaction. इसके बाद है हमारे पास वीक 12 जहाँ पे जो है डिजिटल कॉन्शियस स्लाइड्स कॉन्शियस साइंटिफिक fragmentary are trace evidence, violent and non-violent digital evidence, branches of digital forensics, stratigraphy, virtual use for mobile device, digital forensic process involve Locard, exchange principle help in criminal important hashing of in digital forensics, main goal of computers, remain state of digital forensics, purpose of write blocker, acquisition in digital forensics, hashing used in digital forensics, steganography, anti-forensics technique, this degaussing, time stamp in anti-forensics trial, fusion, example of early forensics tool, CE, EP certificate, mobile forensic tools, SSD data wiping hardware, purpose of forensic report, logical acquisition, name one challenges in digital forensics, early digital forensics done live, example of artifact wiping method, difference between wiping and disk wiping, computer forensics, early digital forensic tool, main goal of cybersecurity, computer related crime, important of hashing, important of forensics, digital evidence provide premeditation, memory forensics, block devices, ACPO guideline, cross-type analysis,
mobile device fonts, limitation of digital fonts, network fonts, volatile data. Give example of fonts being used in real case. Fonts data analysis, image fonts, anti-fonts, stereography, bypass window login for memory analysis, trial of fusion, common file wrapping, cold boot attack, फिजिकल एंट्री फोर्सेस। फिर हमारे पास वीक 13, 14, 15 FTPS डिफरेंस बिटवीन implicit and explicit, HTTPS important for web communication, SSL means ये जो IP stack, modes of IP stack, purpose of AH in IPAC, SRI in SHTTPS, city provide certificate, main advantage of HPKP, industry benefit, HTTPS, SSH authentication a client, SSL TLS purpose of HPKP, SRI key difference between SSL and TLS, forward security in TLS role of an SSL TSL code, advantage of SSH, recommendation to disable password authentication और इसके हैंडशेक। और फिर हमारे पास वीक 14 स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक ही रह गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। Should base operating system be secure first? Operating system hardening. Common operating security mechanism. Default system configuration be avoided. Elevated privilege be managed. Role of user and group permission. Some additional security tools for operating system. Protection mobile device security important. See recommendation for operating system. Better to avoid installing unnecessary software. फिर है हमारे पास application white license, security testing necessary, components of security maintenance important for logging, difference between backup and archive, path management in Linux Unix, MICA, where are Windows system configuration, help server maintain update system। फिर इसी की जो है वो सिक्योरिटी टूल है। फिर हमारे पास लास्ट वीक स्टार्ट हो जाता है साइबर क्राइम। फर्स्ट में FBI, फिर लॉ यूज इन ऑस्ट्रेलिया, फिर है कोर्ट मैनेज कॉपरेट हैकर, फिर रेसिंग अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, TTPS इन साइबर इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर है स्किल रोड एंड स्किल रोड, फिर बिटकॉइन रोल है, फिर टाइप ऑफ एड फ्रॉड है, इफेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड चैलेंजिंग इन प्रो सिक्योरिटी साइबर क्राइम है। फिर हमारे पास है एग्जिट स्कीमिंग इन डार्क नेट है, आइडेंटिफाई थीफ्ट है, साइबर क्राइम है, PII है, रैंसमवेयर है, साइबर टेररिज्म है, साइबर एक्सट्रीमिज्म है, साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग है, फिशिंग है, मैचिंग वन टूल यूज्ड बाय क्रिमिनल टू हाइड ऑनलाइन आइडेंटिटी, एड फ्रॉड है, मेजर साइबर अटैक इंसिडेंट है, प्रिवेंट इम्पोर्टर ऑफ साइबर क्राइम है। फिर साइबर क्राइम की डेफिनेशन आ गई, करंट साइबर क्राइम आ गया, साइबर वारफेयर आ गया, फिर फेमस साइबर क्राइम इंसिडेंट आ गया, फिर कॉमन फिशिंग टेक्निक आ गई, रैंसमवेयर आ गया, फिर आइडेंटिफाई थीफ आ गए, कॉमन साइबर क्राइम्स कैटेगरीज आ गई, फिर मेंशन सम एजेंसीज आ गई जो कम्बैट करती हैं साइबर क्राइम को, फिर साइबर टेररिज्म आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर एज टूल इन साइबर क्राइम। लास्ट क्वेश्चन है नेम टाइप ऑफ फिशिंग अटैक।
इसके साथ ये वीडियो भी हुई हमारी कंप्लीट।